ओके एनी हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो पोर्शन है हमारे पास दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यू थिंग्स के हम लोगों ने जो ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था। मोटर्स एंड जनरेटर इफेक्ट जिसको हमने कहा था ये दोनों बेस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। वो ही फर्दर ऑन हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे। देयर इज नथिंग न्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, एवरीथिंग इज सेम। के नॉर्थ साउथ पोल क्या होते हैं, राइट हैंड रूल्स क्या होते हैं। राइट हैंड रूल्स हमने दो पढ़े हुए हैं, दोनों ही इन्होंने दोबारा से डिस्कस किए हुए हैं। डॉट एंड क्रॉस का मीनिंग क्या होता है हमारे पास। डॉट का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ द पेज, दैट इज थंब विद पॉइंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ योर लेफ्ट और राइट हैंड व्हाटसएवर जो भी रूल लगा रहे हैं हम। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इन टू द पेज, दैट इज थंब विद पॉइंट इन, सॉरी थंब क्यों कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा हमारे पास। यहाँ पे वही रूल्स लगेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए होता है हमारे पास, चार्ज्ड बॉडीज के लिए। एंड राइट हैंड रूल हमारे पास किस लिए होता है, फॉर जनरेटर्स, जहां पे हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। सो हमने जो डिस्कस किया था कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करती है, experiences a force, and that force is proportional to the current that is passing across the conductor, the length of the conductor, and the magnetic field in which it is placed, and the angle at which it is placed. So when we remove the sign of proportionality, we get ILB, sine of theta. The constant has a value of 1 when a current of 1 ampere passes through a conductor of 1 meter when a magnetic field of 1 Tesla is applied at perpendicular to it. ठीक है। सो यहाँ से B जो होता है वो आता है F over IL के, and this is known as magnetic flux density, which is Tesla with a unit of, and Tesla is equals to 1 newtons per ampere, sorry, per ampere into meter. Today we'll discuss about K when a conductor is placed, is moved across a magnetic field held perpendicular to it. तो वो जो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट चार्ज जो होता है, जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। Q is the charge present in the conductor. V is the speed with which, the velocity with which the conductor is moving across the magnetic field, and B is the magnetic field, and sine of theta is again indicating कि वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे हम एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बिकॉज हमने बेसिकली एज मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि हम मोशनल ईएमएफ की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करना है, हमने उसकी तरफ जाना है कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है इन द कंडक्टर उसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू गो टू द इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि we know that K F is also equals to QE, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इक्वेशन आया। सो QE किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ये E क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो QE किसके इक्वल आ जाएगा, VB के, और E किसके इक्वल आ जाएगा, V इंटू B के। अब यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, V ओवर L के।
ठीक है, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस आर एल जो भी रख ले, हम एल यहाँ पे इसलिए रखते हैं बिकॉज हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को इन कंसिडरेशन लेके आ रहे हैं। व्हेन वी प्लेस दिस, माइनस का साइन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये चीज एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट्स ओनली टू शो सर्टेन मीनिंग इन एन इक्वेशन, इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर एट एनी कॉस्ट। व्हेन वी पुट दिस हियर we'll get delta V over L equals to V into B. From here we'll get delta V is equals to VBL. ये डेल्टा वी किसको शो करेगा? मोशनल ईएमएफ को, which is equals to VBL sin of theta. So now we have two equations. जब हमने force on a charge present in a conductor placed in a magnetic field होगा तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। जब हमें मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हम इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे, सॉरी, we'll use this formula. Clear? Yes. Now getting on to the topic where I was discussing you, बल्कि नहीं, हम लोगों ने mutual and self induction will do in the later topic. एक point रह गया था which I have seen in certain questions, so I want to go to that topic. That is Ampere's law. Ampere's law का जो definition होता है वो बहुत basic सा होता है, it's important, and E over M ratio भी हम लोगों ने calculate करनी है, और एक और भी मजे की चीज करनी है which I'll tell you in a bit. But before that, I will tell you the equation for the Ampere's law. अच्छा, एम्पेयर्स लॉ था क्या? आप लोगों ने, हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है। क्या था एम्पेयर्स लॉ? एम्पेयर्स वो जो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना जो था वो डिस्कवर किया था, वो जो कंपास नीडल्स वाली एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी ना, कि व्हेन कंपास नीडल्स आर प्लेस्ड ऑन अ कार्डबोर्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट, तो उस तरीके से। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है कि एम्पेयर्स लॉ हमारे पास किसके इक्वल होता है एंड हाउ, व्हाई डू वी नीड इट। कि ऑब्वियसली जो हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ा है उसको हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि कंसिडर करो कि हमारे पास वो एक कार्डबोर्ड का पीस है, उस पर हम लोगों ने सर्कल पुट कर दिए हैं, ठीक है, और सेंटर से वो बिल्कुल पास कर रहा है, हमने इसको स्मॉल पास में स्प्लिट अप कर दिया सो दैट अक्रॉस ईच स्मॉल पाथ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले आइडियल केसेस की बेसिस पे डिस्कस करते हैं, फॉर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि वैल्यूज चेंज ना, ठीक है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? कि हमने कार्डबोर्ड का पीस लिया, उसके बिल्कुल सेंटर में से जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पास किया, और उसको उस पॉइंट से पास आउट करके उस पाथ को ये सर्कल ड्रॉ किया सो दैट के रेडियस कांस्टेंट, और उस पे हमने वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है। तो उसने इतने स्मॉल पीसेस के अंदर किया सच दैट कि अक्रॉस ईच लेंथ डेल्टा एल बी की वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट। ओके, Okay. तो here Ampere stated that ऑब्वियसली ये सारी वैल्यूज होंगी हमारे पास, इनका हम लोग जब सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है, अक्रॉस ईच बी एंड उसका एरिया। सो एम्पेयर स्टेटेड दैट के सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट एल यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है, कीप दिस इन माइंड, ठीक है, क्योंकि बी भी कांस्टेंट वैल्यू लेंथ जो है वो इक्वली स्प्लिटेड अप होंगे,
एंड जो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो भी हमारे पास कांस्टेंट होंगी। तो ये इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है। सम ऑफ द क्वांटिटी बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल पाथ्स इनटू विच loop has been divided is equals to mu naught times the total current passing through the conductor. That is, ये जो product of B dot L है इसका sum across each path is equals to mu naught I. Here mu naught is known as permeability of free space and is equals to and is equals to 4 pi into 10⁻⁷ Webers per ampere into Newton. Okay. अब इसके अगेंस्ट एक और इक्वेशन भी आती है in which magnetic flux density is equals to mu naught Ni. इसकी डेरिवेशन भी बहुत इजी है। डेरिवेशन पे नहीं जाती, बस keep this equation in your mind as well. Okay, magnetic flux density in a closed loop is equals to mu naught times n times I. ठीक है, where n is the number of turns per unit length. Now we have three formulas, four actually. F is equals to ILB sine of theta. ये किसका है? Force on a current carrying conductor. Then हमने क्या पढ़ा? F is equals to QVP sine of theta. ये किस पे था? Force on a charge in a conductor when placed in a magnetic field. Then हमने motional EMF की equation पढ़ा which was equals to VBL sine of theta, and हमने magnetic flux density पढ़ा which is equals to mu naught n into I, and एक और equation भी पढ़ा, बल्कि these are the few equations which you are going to use. This is for the current carrying coil. Here n is the number of turns per unit length. These are very important things that you need to keep in your mind to drive the equations. Current through the conductor, क्योंकि ये एम्पेयर्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो ये करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर ये वो होगा थ्रू द रॉड, थ्रू द कॉइल, व्हाटसोएवर जिसको भी कहना है, एंड म्यू नॉट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। This is just the start of electromagnetism. We have to do so much of the graphs. We have to do so many other equations. Motional EMF के बाद we have to discuss about the transformers, the mutual induction and self induction क्या होता है. We're going to discuss all those things in the further topic, but